Look at how nice my hair is looking in the sunshine. Hello, welcome back or welcome to my channel. I'm Avni and today I'm going to talk about a very important topic, a topic that most of us I know struggle with, and that is self-love and body image issues. This is a challenge for almost all of us, mainly because I feel it's because of the internet. मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनेट के पहले जो अपने मॉम डैड का जनरेशन था या अपने दादा दादी का जनरेशन था उनको कभी हुआ नहीं बॉडी इमेज इश्यूज बट आई फील लाइक इट हैज बीन exaggerated because of the internet and because of social media. Basically हमें body issues क्यों होता है? Because we end up comparing the way we look with other people, and comparison has been a part of human nature since humans have existed. बट लाइक आई सेड कि वो कंपैरिजन सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज पहले यू यूज टू कंपेयर, मतलब जब इंटरनेट नहीं होता था तब हु वॉज योर कंपेरिजन पूल? योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, that's it. But abhi your comparison pool is the entire world because you have the access to the entire world, so that just makes it so much more hard. Talking about my experience, my body image issue started in 10th. मतलब मेरे को वो incident भी याद है. I remember it was the morning I was putting on my school uniform and on a random day, मतलब I think it was after दिवाली वेकेशन का दिन या समर वेकेशन का, लाइक इट वाज अ डे आफ्टर वेकेशन, ओके, एंड आई वाज वेयरिंग द यूनिफॉर्म एंड आई रियलाइज्ड कि मेरा वो जो बकल था, जो हुक था, वो लग नहीं रहा था. सो आई रियलाइज दैट ओ शिट, आई हैव ग्रोन फैट. And I remember that moment so specifically, and after that it just kept, the voice just kept growing louder because then I constantly started to think कि shit, मैं तो मोटी हो रही हूँ, I have grown fat, ऐसे कैसे मुझे यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, इतना क्या मैंने खा लिया. And then I started comparing myself with other girls in my batch, and that is how my body issues had started. But abhi it's safe to say that I'm in a very good place with regards to that, mentally and physically, touch wood. लाइक आई सेड कि इंटरनेट की वजह से ये सब बहुत बढ़ चुका है, एंड बिकॉज वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू ग्रो अप विद इंटरनेट, and that's why maybe our parents or elders don't really understand the amount of pressure that we put on ourselves to look a certain way or to have certain things just because we see other people having those things or looking that way on the internet. Talking about self esteem issues, मतलब body image तो एक side हो गया because body image is talking about your physical body. Self esteem issues stem from like your mental, matlab self esteem issues I think are a wider range of issues where they are not just about your body but they are also about your personality, and I have dealt with those as well. I mean, who hasn't? I think those issues start from being a teenager, and like it takes a lot of time and lot of efforts to actually put those issues away, like to resolve those issues and put them away and to become your own person. And the only way to get over those issues is to constantly work towards being a better person. I mean, there is no other way. वो ऐसे magically तो disappear होने नहीं वाले. I mean, see, so for example, जो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है, the negative mantras that you keep chanting in your head कि I'm not smart enough, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, I'm not confident enough, I am not thin enough, like जो भी है, the one that you keep on chanting in your head till the point that you start believing that it's true. Why can't you do the same with positive mantras? Because that's what I have trained my mind to do. Because अभी like मैं अभी ये recently बात कर रही थी with Aditya that till the recent past, I would say around 3 years back तक, मतलब 3 years back तक ना मेरे दिमाग में sort of ऐसा एक बहुत नेगेटिव सेल्फ इमेज बन गया था अबाउट माई सेल्फ. Self image means it's about myself. I just made that statement redundant. Anyway, मेरे दिमाग में बहुत एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बन गया था स्टेटिंग कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आई एम वेरी डम एज अ पर्सन, लाइक मुझे कुछ समझता नहीं है, आई एम वेरी स्लो एट ग्रास्पिंग थिंग्स एंड लाइक आई जस्ट कांट डू वेल इन लाइफ बिकॉज मुझे कुछ समझेगा ही नहीं. एंड दैट इमेज फॉर्म्ड बिकॉज ऐसा रैंडमली तो कोई इमेज फॉर्म होता नहीं है, बिकॉज वाई वुड समवन रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट देमसेल्व्स. मतलब
as far as I am concerned, like as far as talking about myself, मैं ऐसे रैंडमली खुद के बारे में नेगेटिव चीजें नहीं सोचती हूँ, कभी भी नहीं सोचा है. इफ आई थिंक समथिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ, दैट इज बिकॉज वो मेरे ब्रेन में फीड किया गया है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम आई वॉज अ चाइल्ड. सो जो भी ये नेगेटिव नोशन था कि मैं डम हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ समझता नहीं, वो ना सबकॉन्शियसली मुझे ऐसे मेरे दिमाग में डाला गया था सिंस द चाइल्डहुड. मतलब इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रैंडम टॉन्ट्स, या इट कुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय माय फैमिली, बाय माय फ्रेंड्स, बाय माय पियर्स. एंड वो सॉर्ट ऑफ ना स्टिक होता गया. मतलब इफ यू हैव सीन द मूवी इनसाइड आउट 2, उसमें भी दिखाया है कि कैसे योर बिलीफ, मतलब योर मेमोरीज form your core belief and that core belief forms your entire sense of self. तो वो वैसा ही होता गया बिकॉज मुझे ऐसे लोग बोलते गए एंड मैं सुनती गई एंड इट सॉर्ट ऑफ स्टक टू माई पर्सनैलिटी एंड स्टक टू माई सेंस ऑफ बिलीफ दैट आई वॉज नॉट अ स्मार्ट इनफ पर्सन. एंड सो वो बिलीफ तोड़ने के लिए या चेंज करने के लिए टुक quite some time, and that actually happened because I had Aditya feeding into my ear कि नहीं, you are smart enough, you are a smart person, तेरे को सब समझता है, you are very quick at grasping things, there is nothing wrong with you, stop saying things like that to yourself. And वो ना बार बार मेरे को बोलता गया and sort of so the negative memories या negative thoughts जो मुझे आते थे regarding my intellect were sort of like getting replaced by those positive words. And that's how my sense of belief has now changed completely. I was just telling him the other day कि अभी whenever in work I get assigned a new task या new work to do that I have not done before, अगर वही काम तूने अर्लियर अवनी को, ओल्ड अवनी को दिया होता, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन होता कि शिट, मुझे कैसे समझेगा ये, मेरे से तो नहीं होगा, मुझे तो इसको समझने में ही बहुत टाइम चला जाएगा, आई कैन नॉट डू इट. बट राइट नाउ whenever such things happen to me, the first thought that comes in my brain is I can do this. मतलब इसमें ये क्या रॉकेट साइंस नहीं, इवन रॉकेट साइंस मैं कर लूंगी भाई, आई एम स्मार्ट इनफ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हैंडल नहीं कर सकती. एंड दैट्स हाउ माय इंटरनल मोनोलॉग हैज चेंज्ड. सो मेरा एंटायर पॉइंट यही था कि अनलेस एंड अनटिल यू कॉन्शियसली डिसाइड टू चेंज दोज नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट योरसेल्फ, वो होने नहीं वाला है. यू हैव टू टेक दैट स्टेप. सो मेरा तो एडवाइस फॉर दोज पीपल स्ट्रगलिंग विद सेल्फ एस्टीम इश्यूज या बॉडी इमेज इश्यूज इज, first step is to go on a social media cleanse. Because like I said, ये सब like form होता है, like the base of everything is social media when it comes to today's day and age, today's generation के problems, half the problems would not even be problems अगर social media would not have existed. So my first advice to anybody struggling with this is to go on a social media cleanse. Because आजकल लोग वो line draw नहीं कर पाते where they start believing that everything that you see on social media is real. When it's not, it's clearly not. People only post their highs, nobody posts their lows. Even me, for example, मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे टाइटल्ड लाइंग टू माई सेल्फ. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, प्लीज गो वॉच इट, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंस्पिरेशनल वीडियो, एकदम छोटा सा वीडियो है. एंड वो मैंने शूट किया गिविंग पॉजिटिव वाइब्स टू यू एंड लाइक वेरी इंस्पिरेशनल एनर्जी टू यू. एंड वो शूट करने के बाद I was crying because I was not in a good place mentally, and like many things were happening and I was not happy with how things were turning out around me. तो मैं रो रही थी and I was just thinking in that moment कि I am such a hypocrite because मैंने just अभी एक वीडियो बनाया talking about how everything happens for a reason, how you should trust the process and what not, and then the minute I switched off the camera I was crying because things were not happening the way I wanted them to happen. So that's what I'm saying, कि not everything that you see on social media is real. People do not want you to know the actual struggles that they are facing in life. And so even मेरा केस ले लो, मैं इंस्टा पे किसी को फॉलो नहीं करती. I have set a number of my following list to 70. पहले वो 90 था, अब मैंने और कम कर दिया, अभी it is 70. So I only follow 70 accounts. एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर इंस्पिरेशनल पोस्ट के अकाउंट्स या तो सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स. सेलिब्रिटीज ऑल्सो दोस्त दैट आई जेन्युइनली वांट टू नो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लाइक जस्टिन वगैरह. I follow only my very close and good circle of friends because
आई डोंट वॉन्ट रैंडम पीपल ऑन माई फीड, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद को कंपेयर करूंगी. इफ आई नो माई नेचर देन वाई वुड आई स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट. सो मैंने सारे उन लोगों को निकाल दिया मेरे लिस्ट से हु वर सर्विंग नो पर्पस टू माई मेंटल हेल्थ. सो माई फॉलोइंग लिस्ट इज वेरी स्मॉल एंड आई नो कि सीइंग माई फ्रेंड्स के पोस्ट जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनसे उनको देख के मुझे कुछ जेलसी या मुझे कुछ एनवी फील नहीं होता है, बिकॉज आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर देयर अकम्पलिशमेंट्स एंड देयर हैप्पीनेस एंड देयर सक्सेस इन लाइफ. एंड जिनसे मुझे होती थी या जिनसे मैं खुद को कंपेयर करती थी उनको तो मैंने निकाल दिया. इट इज एज सिंपल एज दैट. योर मेंटल हेल्थ इज इन योर हैंड्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, please note कि your value does not depend on your physical body. Just because you don't think you are stereotypically beautiful या you don't have that perfect proportion वाली body या whatnot does not make you less of a human being. Because जिनके पास भी honestly वैसी body होती है, either they are celebrities who have done a lot of surgeries to look that way, or they are people who have worked their ass off to get that kind of a body. And if you really want that kind of a body, then again वो तुम्हारे हाथ में. You can take those efforts, you can hit the gym, you can start the diet, वो तुम्हारे हाथ में. But just sitting on your bed eating chips and then crying about your appearance will not help you. Even you know that. I know you're smart enough to know that. And also, in general, looks and appearance are mostly rewarded online only. I mean, in real life, with your, matlab, think about it, the relationships that you have with your family, your friends, do you think your looks matter in those relationships? Matlab, do you think those people are around you because you look a certain way? Of course not. It all comes down to who you are as a person. Your personality should matter, not your looks, because like I have said 1,000 times, looks fade, personality does not. And like, not to sound too morbid or anything, but on your deathbed, like, or after you've died, do you think people are going to talk about how beautiful you looked, or how thin your waist was, or how thick your hair was? No, of course not. People are going to talk about who you were as a person. And if you really want to have a better body image, yeah, better self-esteem, then like I said, ki you need to start working for it. And by working for it, I mean ki don't set unaccomplishable goals. I don't know if that's a word, but set goals that you can actually achieve. Like for example, मेरे दिमाग में था कि मुझे मैराथन रन करना है इन द, मतलब वो कुछ मैराथन था इन द नेक्स्ट 2 months or something, and I was like I will run that marathon. That was some, like, I don't even remember how many kilometers, but it was like a full-fledged marathon. And my dad was like, are you dumb? You cannot run a marathon with just 2 months ka training. It requires 6 months ka training. And I was like, oh, because I didn't know that. But so that's what I'm saying, कि don't set goals that you know that you can't accomplish. एंड मुझे मैराथन रन करना भी नहीं था, ओके, तभी. दैट वाज जस्ट बिकॉज मैंने किसी को देखा था ऑन लिंक्डइन, और आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज ऑन लिंक्डइन ओनली. आई हैड रेड सम पोस्ट एंड दैट गाय हैड रैन ओवर आई डोंट नो हाउ मेनी मैराथन्स ही हैड डन इन हिज लाइफ, एंड इट वाज ऑल अ वेरी इंस्पायरिंग पोस्ट. तो वो देख के मुझे लगा कि अरे तो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. इसलिए आई वाज लाइक मैं भी रन करूंगी मैराथन. बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट द केस. सो माय पॉइंट इज कि set a goal that you can achieve. For example, you can set a goal like मैं रोज walk करने जाऊंगी for 20 minutes for a week, या फिर I will not eat outside food except for Saturday and Sunday. That is what I follow currently. So set goals that you know are achievable, so that it kind of sets a sense of discipline in your mind कि हाँ मेरे से इतना तो हो रहा है, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप you will feel कि हाँ इसको हम और बढ़ाते हैं. मैंने ये पहले भी किसी एक वीडियो में बात किया था इसके बारे में, एंड अगेन आई एम रीइटरेटिंग दैट व्हेन आई से वर्किंग आउट, मतलब व्हेन आई से कि यू शुड वर्क आउट, यू शुड स्टार्ट अ डाइट, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि यू शुड हिट द जिम. वर्कआउट मतलब कुछ भी हो सकता है. इट इज जस्ट अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, फिजिकल एक्सरसाइज. दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डांस, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्पोर्ट और जिम, or I don't know, anything that makes you feel, that does not make you feel miserable basically. Because take my sister का example, उसको gymming बिल्कुल पसंद नहीं. She feels very uncomfortable in the gym because there are other people watching her. मतलब she feels कि there are other people watching her and whatnot. So she says कि मुझे gym में नहीं जाने का है because I don't feel, वो मेरे से नहीं होगा.
And so she started going to a badminton class, and udhar jaake she's mentally happy, physically happy, and like matlab, so my point is ki do things that make you happy, and so that becomes effective in the long term. I think that's it for this video. मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, but I just wanted to come here and talk about it um, because it's a very important issue, and I feel like it needed to be addressed. And yeah, that's it. If you like this video, please hit the like button, and I'll see you in the next week with the new video. Bye bye.